So we was discussing about the heparin. So what is heparin? It is a anticoagulant, natural anticoagulant present in the body. Molecular weight is a 10 to 20,000 delta. So in 1916, first it was isolated from liver, and it is found in the association with the lipoproteins in the mast cell. Mast cell में क्या होता है? Mast cell में होता है histamine. Okay, and more abundant mast cells are found in the liver. So in the liver, it is found in the higher quantity. That's why it is known as a heparin. Commercially, it is obtained from intestinal lung and intestinal mucosa. Intestinal obtained from lungs and intestinal mucosa of pigs and cattle. It is a naturally occurring anticoagulant responsible for the maintaining the fluidity of your blood. Chemically, it is a mucopolysaccharide. It is composed of a sulfated D-glucosamine, sulfated D-glucosamine and D-gluconic acid unit together linked through a oxygen bridge. It is the strongest acid in the body, or the strongest acid, and because it has a content which are easily bind with the sulfuric acid, that's why it is the strongest acid. Its anticoagulant action is also because of the strong acid nature. Now mechanism क्या है इसका? How it will act as anticoagulant? It prevents the coagulation by three ways. First, it binds to antithrombin and activates the antithrombin, which has a negative role in the acid, negative role in the coagulation, which inactivates the active factor. ये inactivate करेगा active factor 9A, 10A and thrombin को. Also, it prevent the polymerization of fibrin. So three mechanisms of action are there. So this heparin acts as an anticoagulant by three way. First, it binds to the antithrombin 3 and activates the antithrombin 3. तो antithrombin 3 अगर activate हो गए तो antithrombin का role क्या है? To prevent the blood coagulation. Activation of antithrombin 3 leads to inactivation of active factor like 9A, 10A and thrombin. ये जो factors होते हैं 9A, 10A and thrombin, they are responsible for the coagulation. उनको inactivate कर दे. Third thing, it prevent the polymerization of fibrin. Fibrin का clot जो last में बनता है, polymerization होता है. We have seen in the blood clotting, process of blood clotting. So that is also prevented. So this heparin will act in a this way. Now एक क्वेश्चन आया था, the site of action of heparin. heparin का site of action क्या है? मतलब कहाँ पे act होता है heparin? तो heparin बच्चों को लगता है heparin liver से आया तो liver पे act होगा. It acts in a blood. So blood clotting factors जो है उसके ऊपर एक्टिवेट होता है. The site of action of heparin is a blood, not a liver. उससे का एक क्वेश्चन आया था site of action of warfarin. वो अपन बाद में देखें. It will also decrease the hyperlipidemia. It decreases the hyperlipidemia. It will produce tender lipid. It also inhibits the aldosterone secretion and causes hyperkalemia. Now ADME क्या है? Absorption, distribution, metabolism, elimination. As it is an in vivo anticoagulant. ये बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है. So it is not effective orally. ये orally दे नहीं सकते. It is given by injectable route. It is not effective orally. It is given by parenteral route. Because if it is given by orally, it is metabolized in the liver by heparinase. Absorption distribution हो गया है. Adverse drug reaction. These are also important, right? So nowadays heparin is obtained from another source. Heparin is obtained from another animal. अगर दूसरे एनिमल से heparin आया है तो that will be antigenic in nature. कहाँ से आता है heparin? आजकल कमर्शियली जो heparin मिल रहा है इंजेक्शन में वो ह्यूमन के बॉडी में से तो नहीं निकला ना. So that is obtained from intestinal mucosa and lungs of pigs and cattle. तो जानवरों और सूअरों के लंग से या फिर इंटेस्टिनल म्यूकोसा से वहां से आता है वो heparin. That is antigenic in nature. It may produce allergic reactions. ये क्या करता है? Allergic reaction produce. Allergic reaction like asthma, urticaria, rhinitis, bleeding. अभी ये क्या है? Bleeding करने वाला है. हर एक एंटीकोगुलेंट का एडवर्स इफेक्ट होने वाला है bleeding. क्यों? एंटीकोगुलेंट है वो कोएगुलेशन नहीं होने देगा ब्लड का. मतलब ब्लीडिंग हो गई हुआ. सो हर एक एंटीकोगुलेंट का एडवर्स इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग. So bleeding because of the excessive dose. Hemorrhage is at the kidney में क्या करेगा? ब्लड का hemorrhage मतलब रक्त स्राव करेगा किडनी में. Hemorrhoids मतलब आपके hemorrhoids मतलब पाइल्स करेगा आपको. पाइल्स मतलब आपके जो रेक्टम है वहां से भी ब्लड आएगा. तो hematoma मतलब ब्लड कहाँ पे भी कोई hematoma. Then thrombocytopenia, decrease in the thrombocytes. Then alopecia मतलब क्या?
एलोपेसिया लॉस ऑफ हेयर, आप टकले बन जाओगे, ठीक है, बनना है किसको, टकला। सो एलोपेसिया मीन्स आप हेयर लॉस, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द हेड, दैट इज एलोपेसिया। ओस्टियोपोरोसिस मतलब डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी, आपका जो बोन्स होता है उसका कैल्सिफिकेशन कम कर जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। नाउ ओस्टियोपोरोसिस आल्सो कॉज्ड बाय अनदर ड्रग। ओस्टियोपोरोसिस जो करने वाले ड्रग कौन से हैं, जो स्टेरॉयडल ड्रग होते हैं, जैसे स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ट्राइमसिनोलोन, प्रेडनिसोलोन, दे आल्सो कॉजेज द ओस्टियोपोरोसिस। अभी एलोपेसिया करने वाले दूसरे ड्रग कौन से, अभी याद रखो। सो एंटी कैंसर ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स दे विल कॉज एलोपेसिया। एलोपेसिया मतलब क्या, लॉस ऑफ हेयर, जो पूरा यहाँ पे पूरा बाल झड़ जाएंगे आपके, टकले बन जाओगे। सो एलोपेसिया इज कॉज्ड बाय दिस heparin is as an adverse effect. Also other drugs like anti-cancer drugs, all anti-cancer drugs will produce alopecia. Osteoporosis मतलब आपके जो हड्डी है वो कमजोर कर देगा। Osteoporosis means decrease in the bone density. So this is the adverse reaction of heparin. Second, low molecular weight heparin. क्या है अभी, लो मोलिकुलर वेट heparin, उसके नाम में ही देखो लो मोलिकुलर वेट। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है बॉस, इसका मोलिकुलर वेट होता है 4 to 7,000 डेल्टा। तो ओरिजिनल जो हिपेरिन है उसका मोलिकुलर वेट कितना है, 10 to 20,000 डेल्टा। सो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन का वेट कितना होता है, 4 to 7,000 डेल्टा। याद रखो ये 4 to 7,000, यहाँ पे 0 लिखना नहीं है मैंने, सिर्फ 4 to 7,000 लिख, 4 to 7,000 डेल्टा यहाँ पे है, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। मोलिकुलर वेट कितना होगा इसका, 4 to 6.5 thousand डेल्टा, मतलब नियर बाय 7,000 डेल्टा, 4 to 7। It is absorbed more uniformly. Now low molecular weight heparin ये कहाँ से आएगा, what will be the source? जो ओरिजिनल heparin है आपका, उसको ही डिग्रेडेशन करके, उसको ही हाइड्रोलिसिस करके ओरिजिनल heparin फ्रेगमेंटेड, उसका फ्रेगमेंट्स बनाया जाता है, उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है, उसका डिग्रेडेशन किया जाता है, and you will get a low molecular weight heparin. Now low molecular weight heparin will have molecular weight in a range of 4 to 7,000 dalton. It is absorbed uniformly because high molecular जो original heparin है, that is a high molecular weight and that is not absorbed uniformly. So low molecular weight is absorbed uniformly and it has a longer duration of action. जो normal heparin जो है, that has a lower duration of action, so it has a longer duration of action. Original has a shorter duration of action. So low molecular weight heparin, they are increasingly, their use is increasing nowadays, and their pharmacokinetics and anticoagulant effect is predictable. इनका anticoagulant effect जो है predictable होता है, because low molecular weight heparin they only inhibit the thromboxane A2. They are antagonist to a thromboxane. They are not antagonist to a, sorry, they are antagonist to a prothrombin. They are not antagonist to a thromboxane. Okay, so that's why, because they bind less to the heparin binding proteins, interact little with the platelets, that is they are not, and they are not thromboxane A2, they will not bind to thromboxane A2, they will only inhibit the prothrombin. Okay, and they have less bleeding episodes. Low molecular weight heparin antithrombin complex inactivate the factors like factor 10A. 10A factor क्या है, steward power factor. Low molecular weight heparin antithrombin complex inactivates the steward power factor. इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसका trade names. Okay, so what are the different types of this low molecular heparin? First one is nothing but the enoxaparin. Enoxaparin is known as a Clexane. Clexane नाम का इंजेक्शन आता है जिसको हार्ट अटैक आ चुका है या फिर जिसके झगड़ा हो चुका है, जो जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, so in that condition enoxaparin is used. Clexane. Then dalteparin, fragmin is the name of injection. Tinzaparin, longiparin is the trade name. Pernaparin, that is a Floxam. Rebiplarin, Plivarin. So these are the trade names. ये trade names है. So enoxaparin का trade name होता है Clexane. क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है. Then deltaparin का trade name है Fragmin. Tinzaparin का trade name है Longiparin. Pernaparin का है Floxam. This Rivaparin का है Clevirin. So trade name ज़्यादा याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो enoxaparin, Clexane. ये तो हो गए low molecular weight heparin. They has a superior
predictable anticoagulant activity as compared to original native heparin. Native heparin का short action होता है, short duration of action. Low molecular weight heparin will have a longer duration of action. Low molecular weight heparin will have molecular weight in the range of 4 to 7,000 delton. हाई जो heparin होता है उसका ओरिजिनल molecular weight होता है 10 to 20,000 delton. Low molecular weight heparin has a less bleeding episode. डायरेक्टली heparin देंगे तो वो ज़्यादा ब्लीडिंग करता है. लो मोलिकुलर वेट heparin देंगे तो ब्लीडिंग एपिसोड नहीं है. सो ब्लीडिंग एपिसोड बहुत ही कम है. इट विल नॉट कॉज हेमाटोमा एंड ऑल दैट. It will not cause alopecia. It will not cause thrombocytopenia and all that. So it has some advantage. Now, as you know that heparin क्या है? It is a strong acid. In case of heparin overdose, अगर heparin का overdose हो गया और heparin का toxicity हो गया, so what is the antidote? Question आ चुका है. Heparin antagonist. Antidote for heparin. Protamine sulfate is the antidote for heparin. Question आ चुका है देखो. Protamine sulfate is the antidote for heparin. हेपेरिन का एंटीडोट कौन है? प्रोटामाइन सल्फेट. फिर प्रोटामाइन देखो, प्रोटामाइन मतलब क्या है? अमाइन मतलब क्या है? बेसिक. अमाइन मतलब क्या है? बेसिक. सो आपका हेपेरिन क्या है? इट इज एसिडिक कंपाउंड. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट इन द बॉडी. सो दैट्स व्हाई इट्स एंटागोनिस्ट इज अ basic in nature. So protamine sulfate is a basic compound which reacts with the acidic groups of your heparin, and protamine sulfate is found in the sperms of certain fish. Fish होता है fish, उसका जो sperms होता है वहां से ये प्रोटामाइन सल्फेट आइसोलेट किया है. प्रोटामाइन सल्फेट इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर हेपेरिन टॉक्सिसिटी और हेपेरिन ओवरडोज. रिमेंबर, प्रोटामाइन सल्फेट इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर हेपेरिन टॉक्सिसिटी और इट इज अ हेपेरिन एंटागोनिस्ट. इट इज फाउंड इन द sperms of certain fish. Then next one is hirudin. Hirudin is a potent antithrombin polypeptide obtained from Hirudo medicinalis. Hirudin क्या है? It is a anticoagulant. Hirudin क्या है? It is a anticoagulant. It is a polypeptide obtained from natural source. ये plant से आया है. कौन सा plant है? Hirudo medicinalis. It is a potent antithrombin polypeptide. Then another anticoagulant like bivalirudin, dinaperoids are other heparin. Bivalirudin, dinaperoids, they are other heparin antagonists. So main antagonist कौन है? That is nothing but the protamine sulfate. So you have to remember that. तो ये heparin antagonist नहीं है, heparin analog. यहाँ पे analogs आएगा because bivalirudin, dinaperoids, hirudin, all these are the anticoagulants. heparin का antagonist सिर्फ ये protamine sulfate. ये क्या है? ये सब anticoagulant है. heparin के जैसे anticoagulant. They are known as other heparin analogs. Now next we'll see. You can see over here mechanism of action of heparin. heparin का mechanism क्या है? Okay, so when in vivo heparin, जो आपकी बॉडी के अंदर का जो heparin है, so it will act as anticoagulant. ये coagulation नहीं होने देगा ऐसा नहीं है. इंजुरी हो गई तो coagulation होने देगा. बट exogenous heparin, बाहर से कोई heparin देंगे, so that will speed up anticoagulant action 1000 folds. 1000 times anticoagulant action increase करेगा. heparin will bound with the antithrombin. heparin क्या करता है? antithrombin 2 को बाइंड करता है और उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है antithrombin 2 and 3 को. Now binding of heparin to antithrombin 3 will inactivate the activated thrombin factor number 9 and factor number 10. ये जो फैक्टर्स है बल्क कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको इनएक्टिवेट करता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है, एंड दैट इज एंटीकोगुलेंट. So heparin inactivated, that result in the heparin antithrombin complex inactivates the active factors and then heparin is released, the factors are inactivated. So if factors are inactivated, then there will be no blood coagulation. Now you can have your comparative features of heparin and low molecular heparin. Molecular weight and source. जो स्टैंडर्ड हेपेरिन होता है उसका मोलिकुलर वेट होता है 10 to 20,000 डेल्टन. उसका सोर्स होता है नेचुरल सोर्स. लो मोलिकुलर हेपेरिन जो होता है सो उसका मोलिकुलर वेट होता है 4 to 7,000 डेल्टन एंड इट इज सेमी सिंथेटिक. दे आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑन स्टैंडर्ड हेपेरिन. थ्रोम्बिन एक्टिविटी इन द थेरेप्यूटिक डोसेज. तो जो नेचुरल हेपेरिन है दैट विल इनहिबिट थ्रोम्बिन एक्टिविटी in the therapeutic doses, but this low molecular weight heparin will not inhibit the thrombin activity in the therapeutic doses. वह effect on test on clotting, blood clotting का
टेस्ट जो उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, इट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग विल बी, द ब्लड क्लॉटिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड इन विट्रो, ठीक है, अगर इपेरिन है तो. सो इट हैज अ नॉन सिग्निफिकेंट subcutaneous bioavailability, it has a short bioavailability. Now low molecular heparin has a high bioavailability. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखो, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इसका heparin का. लो मोलिकुलर वेट heparin का लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, 18 to 24 आवर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कितना टाइम के बाद डोज रिपीट करना है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर heparin is a 4 to 6 hours, but in case of low molecular heparin just one dose per day is sufficient. रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा होता है हिपेरिन में, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में कम होता है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैन ऑकर विद द हिपेरिन ट्रीटमेंट, but less chances are there in case of low molecular weight heparin. So this is the basic difference in the heparin and low molecular weight heparin. Now next drug is a oral anticoagulant. Oral anticoagulants उसमें आता है आपका Coumarin. So they are the Coumarin derivative. Example is bis-hydroxy-Coumarin. It is also known as Dicoumarol. Dicoumarol. यहाँ पे अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका में एक ग्रास होता है, स्वीट क्लोवर. स्वीट क्लोवर नाम का एक क्या होता है, घास होता है. घास मतलब क्या, जानवर जिसे खाते हैं, गवत घास होता है, जानवर जिसे खाते हैं. तो स्वीट क्लोवर नाम का एक घास था अमेरिका में, wheat clover. Okay, now due to some cattle they used to eat this sweet clover and उनको क्या हो गया कि bleeding disorder हो गया, तो उनका bleeding रुकता ही नहीं था. That's how by chance, by by serendipity this Coumarins was isolated. This Coumarins was isolated from spoiled sweet clover grass in 1943-44, and it was the causative factor for severe hemorrhagic disease in the cattle, also known as a sweet clover disease. तो ये जानवरों का ये प्रॉब्लम हुआ था कि जानवरों ने क्या किया, ये स्वीट क्लोवर नाम का जो ग्रास है उसको खा लिया, एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम द हेमोरेजिकल डिसीज, मतलब हेमोरेज हो रहा था, उसमें ब्लीडिंग रुक नहीं रहा. सो आफ्टर रिसर्च इट वाज फाउंड दैट स्वीट क्लोवर ग्रास consists of this hydroxycoumarin derivative known as a dicoumarol, and from that time it was isolated and it is used as an anticoagulant, oral anticoagulant. Mechanism of action क्या है, anticoagulant action only in vivo not in vitro, मतलब ये सिर्फ बॉडी के अंदर जाएगा तभी एंटीकोएगुलेंट एक्शन दिखाएगा, बॉडी के बाहर मतलब लैब में अगर ब्लड है तो उसमें एंटीकोएगुलेंट एक्शन नहीं दिखाएगा. हिपेरिन, आपका जो हिपेरिन है इट इज अ एंटीकोएगुलेंट इन विवो एज वेल एज इन विट्रो. हिपेरिन जो है वो बॉडी के अंदर भी एंटीकोएगुलेंट है, बाहर भी एंटीकोएगुलेंट है. So heparin is in vivo as well as in vitro anti. But this dicoumarol or coumarins, they are not a in vitro anticoagulant. They are in vivo anticoagulants. They inhibit the synthesis of blood clotting factors. So coagulation factors जो होते हैं factor number 2, 7, 9 and 10. These factors they are known as vitamin K dependent blood clotting factors. So factor number 2, 7, 9 and 10. These factors in the very initial lectures we have seen that these factors requires vitamin K as a for synthesis, not for synthesis, for activation. So for the activation of these factors vitamin K is required. So they are known as vitamin K dependent blood clotting factors. So anticoagulant action is due to the inhibition of these factors. Okay? So coagulation factor like factor number 2, 7, 9 and 10, they are synthesized in the liver in inactive form. Liver में इसका synthesis होता है लेकिन वो क्या होता है, inactive होते हैं. So they are synthesized in the liver in inactive form and they becomes active, and for their activation needs a carboxylation of amino terminus of glutamic acid residue. ये जो फैक्टर है क्या है, प्रोटीन है, उसमें ग्लूटामिक एसिड भी रेसिड्यू रहता है. सो दैट ग्लूटामिक एसिड शुड नीड कार्बोक्सिलेशन, वो ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होना चाहिए अमाइनो टर्मिनस का. एंड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस glutamic acid residue of these factors, so that carboxylation is
coupled directly with the oxidation of vitamin K. विटामिन के का ऑक्सीडेशन और इनका कार्बोक्सिलेशन साथ में ही होगा. So vitamin K epoxide, okay, so carboxylation of this amino terminus of this glutamic acid residue of these blood clotting factors is directly coupled with the oxidation of vitamin K to its epoxide. To maintain the carboxylation of these factors, epoxide vitamin K is reduced by vitamin K reductase. ये mechanism बाद में diagrammatic presentation में भी देंगे. Now this enzyme complex is inhibited by this coumarin derivative, and there is a prevention of carboxylation of amino acid residue of glutamic acid. Therefore, active form of clotting factor is not generated. And coumarin therapy increases the plasma antithrombin level. Coumarins and indendione both have uricosuric effect. Uricosuric effect मतलब क्या? Uricosuric effect मतलब they will increase the uric acid excretion in the urine. Uric acid का excretion बढ़ा देंगे. They interfere with the renal tubular reabsorption of uric acid. They have uricosuric effect. Basically, these coumarins, what they are doing, they are preventing the activation of these blood clotting factors, which are vitamin K dependent. तो ये जो blood clotting factors होते हैं, blood clotting factors 2, 7, 9 and 10, तो इनके activation के लिए vitamin K लगता है for the gamma carboxylation of glutamic acid residue of this factor. So for that you need a vitamin K. Vitamin K epoxide. Vitamin K का epoxide बनता है और उसमें ही formation of vitamin K epoxide that is coupled with the carboxylation of this factor, and that is complex is inhibited by these coumarins. Okay, and they also has a uricosuric effects in the uricosuric effects and prevent the, or interfere with the reabsorption of uric acid. Uric acid का secretion बढ़ा देंगे urine. You can see the mechanism of action of these drugs. Vitamin K, जो है आपका vitamin K is converted to epoxide. Vitamin K epoxide. Vitamin K is converted into vitamin K epoxide by this enzyme epoxidase. Vitamin K epoxide, which is very important because this reaction is coupled with the activation of factor 2, 7, 9 and 10. That is by gamma carboxylation of glutamic acid residue. Now this is prevented by dicoumarol. So there is no activation of these factors and they will not coagulate the blood. That's why anticoagulant action. And vitamin K epoxide reductase जो होता है, vitamin K epoxide reductase, ये जो vitamin K epoxide है उसको reduce करेगा और फिर से vitamin K बनाएगा. और तब तक ये factors क्या होते हैं, activate हो चुके होंगे. But this activation is prevented by these coumarins. Coumarin क्या है? They are prevent the activation or gamma carboxylation of vitamin K dependent factors. कौन से? Factor number 2, 7, 9 and 10. Mechanism समझ में आया क्या? बोलो, अगर नहीं आया होगा तो explain कर दो. What is the ADME? Absorption, distribution, metabolism and elimination. So they are incompletely absorbed. They after absorption they extensively bind to plasma proteins. They can cross the placental barrier and are secreted in the milk. They are metabolized by the liver. So that's why these coumarins they are contraindicated in case of pregnant woman. Pregnant woman में ये दिए नहीं जाते. क्यों? Because they can cross the placental barrier and adversely affect the fetus. जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर उसको भी anticoagulant कर देंगे. So they will exert anticoagulant effect on the fetus blood and fetus may die because of the bleeding. That's why these coumarins they are contraindicated in case of pregnant woman. Now adverse drug reaction क्या है? Hemorrhage. तो मैंने तो बोला है कि हर एक anticoagulant drug क्या करेगा? Hemorrhage करेगा. Bleeding यानी hemorrhage. Now bleeding can be controlled by vitamin K oxide, not by minadine. जो vitamin K oxide होता है that can be used as an antidote for coumarin overdose. Coumarin का अगर poisoning हो गया तो vitamin K as an antidote देते हैं. जैसे heparin का toxicity हो गया तो protamine sulfate was the antidote. जैसे coumarin का toxicity हो गया तो क्या antidote है? Vitamin K1 oxide. So they are used as oral anticoagulant. They are teratogenic in nature and cause fetal toxicity, cutaneous gangrene. Rarely they can cause allergic reaction. These are the adverse reactions.
नाउ यूजेस क्या रहेंगे, उसमें एक आता है वारफेरिन, वारफेरिन लास्ट में आता है वारफेरिन। तो वारफेरिन इज रोडेंट पॉइजन। क्या है? रोडेंट पॉइजन। रोडेंट पॉइजन मतलब क्या है? ये आपके घर में जो रात को मेहमान परेशान करता है ना, आपको कौन करता है परेशान? चूहा। तो जो चूहा परेशान करते हैं घर में, तो वो चूहे मारने के लिए वारफेरिन यूज करते हैं। वारफेरिन इज अ रोडेंट पॉइजन, मोस्ट वाइडली एट ड्रग ऑफ चॉइस एज अ एंटीकोगुलेंट। मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा उसको यूज किया जाता है एज अ एंटीकोगुलेंट। वारफेरिन उसके टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, डाइकोमेरोल का भी है, सबका अवेलेबल है। डाइकोमेरोल का भी है, वारफेरिन का है, वारफोन। तो इट इज अ रोडेंट पॉइजन वाइडली used as a drug of choice as an anticoagulant. It is a racemic mixture. ये क्या है? racemic mixture है। It is a equal mixture of dextro and levo warfarin. So R means dextro, yes means levo. Okay. So only yes form is active. Yes form. So anticoagulant effect is due to the yes form of warfarin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। Then it is a water soluble, almost inhibit the antithrombin. Okay. Water soluble of other water soluble derivative amongst the other antithrombin drug। तो बाकी के जो एंटीथ्रोम्बिन है, जो ड्रग है, उसमें का ये वारफेरिन क्या है? वाटर सोल्यूबल। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? देखो इसके इंपॉर्टेंट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एलोपेसिया, एलोपेसिया मतलब क्या मैंने बोला है? लॉस ऑफ ईयर फ्रॉम ईयर। सीवियर डर्मेटाइटिस, सीवियर डर्मेटाइटिस मतलब ये एलर्जी करेगा आपके हाथ के ऊपर। ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन द प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमन में नहीं देने। वारफेरिन के, विटामिन के इज अ वारफेरिन एंटागोनिस्ट। वारफेरिन का अगर टॉक्सिटी हो गया तो क्या देगा? कौन सा एंटीडोट है? विटामिन के। विटामिन के इज एंटागोनिस्ट टू द वारफेरिन। क्वेश्चन आ चुके हैं। अदर ड्रग्स लाइक बार्बिचरेट, रिपम्पिसिन, रिजियोफुल्विन, carbamazepine, they can increase the metabolism of warfarin because they are the enzyme inducers। तो एंजाइम एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? वो अपन मेटाबॉलिज्म देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में, उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज मीन बाय एंजाइम इंडक्शन, व्हाट इज मीन बाय एंजाइम इनहिबिशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर ड्रग, एंजाइम इंड्यूसर। ये जो वारफेरिन है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। लाइक phenylbutazone, drugs like phenylbutazone, sulfonamides, they can displace the warfarin from the protein binding site because warfarin जो है, it is a 99% protein bond। 99% ये प्लाज्मा प्रोटीन को बॉन्ड करता है। मतलब जब इसको अपन देते हैं, आफ्टर द एब्सॉर्प्शन ऑफ दिस वारफेरिन, 99% वारफेरिन इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को 99% बाइंड करता है एंड इट बाइंड्स टू अल्बुमिन। अल्बुमिन के ऊपर डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है। व्हेन वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज साइट फर्स्ट, साइट सेकंड, साइट थर्ड। तो साइट 1 में ये वारफेरिन बाउंड करता है and that's why albumin site 1 is known as a warfarin binding site, so it binds to 99%। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? कम होता है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अपन बाद में देखेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखो कि ये वारफेरिन प्रोटीन को बाउंड करता है, और जहाँ पे दूसरे ड्रग बाउंड करती है, कौन से? जैसे ये लाइक दिस ड्रग sulfonamides, phenylbutazone, they can displace warfarin from binding site and that result in the bleeding। Drug which are enzyme inhibitors, microsomal enzyme inhibitors, they can decrease the metabolism of warfarin। Those which are enzyme inducer which will increase the metabolism of warfarin। इसका metabolic drug interaction ज़्यादा होता है। Main actions of antithrombic drug। So heparin क्या है? heparin क्या करेगा? Speeding up inactivation of thrombin by antithrombin 3। लो मोलिकुलर वेट heparin क्या करेगा? They will inactivate the factor 10। Iridine क्या है? Iridine is an anticoagulant, inactivate the thrombin। Thrombolytics क्या करेंगे? They will break down the clot, so speed up the conversion of plasminogen to plasmin, which breaks the thrombus। Glycoprotein 2b3a antagonist, they will block the receptor and prevent the platelet aggregation। Warfarin क्या करेगा? Inhibit the protein inhibit the synthesis of several coagulating factors including prothrombin। This is just summary again। पूरा चैप्टर अपना आज फिनिश कर दिया। Now you can see pharmacokinetic interactions of warfarin। warfarin क्या करता है?
बहुत सारे ड्रग के साथ में इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। काइनेटिक्स मतलब interaction of absorption, distribution, metabolism and elimination. It will reducing a plasma protein by so phenylbutazone sulfa drugs, they will displace this protein binding site and causes bleeding of enzyme inducers. So those enzyme inducer drugs like rifampicin, barbiturates, they will increase the metabolism of warfarin. Enzyme inhibitors will decrease the metabolism of warfarin. Inhibition of metabolism of warfarin. Pharmacodynamic interaction. Warfarin will increase potentiate the action of aspirin and warfarin. It is incompatible with the antibiotics. So bacterial flora is lost, vitamin K synthesis is decreased, and incompatible with the cephalosporin. Inhibition of blood clotting factors, increase the activity of heparin. Pharmacodynamic interactions. Uses of anticoagulant. ओके क्या यूज होंगे? तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो अगर वेन्स में अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और वही क्लॉट अगर पल्मोनरी ब्लड वेसल में या लंग्स में जाता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड रूमेटिक हार्ट डिसीज, यूज्ड इन द cerebrovascular disease, artificial wall, heart valve transplant and during the bypass surgery। ठीक है, इन विट्रो कोआगुलेंट। ये तो हो गई इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या? टेस्ट ट्यूब में जैसे आपका ब्लड निकला, टेस्टिंग के लिए जा रहा है आपका ब्लड, आरबीसी काउंट वगैरह वगैरह। सो योर ब्लड शुड नॉट कोआगुलेट। सो फॉर दैट इन द कंटेनर ऑफ दैट ब्लड देयर इज अ इन विट्रो कोआगुलेंट। व्हाट इज दैट? ऑक्सैलेट एंड साइट्रेट। अभी ये क्या करेंगे? ऑक्सैलेट साइट्रेट क्या करते हैं? जो कैल्शियम होता है आपका ब्लड में का, उसको क्या करेंगे? उसको चिलेट करेंगे। दे रिमूव द आयन, calcium ion from the blood. Calcium is very important for blood clotting. DDA also does same thing. In vitro coagulant. लास्ट में आपका आता है इसमें थ्रोम्बोलाइटिक्स, जो थ्रोम्बस बनाए हैं ऑलरेडी उसको ब्रेक करने वाले ड्रग, दे आर नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक्स। ठीक है, दे आर नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक्स। नॉर्मली इन योर ब्लड इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, अगर कोई बारीक थ्रोम्बस बन गया उसको ब्रेक डाउन किया जाता है बाय देयर इज नोन एज फाइब्रिनोलाइसिस। बिकॉज आपके बॉडी में क्या होता है? ये होता है क्या? प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन is again inactive protein that is converted into plasmin. Plasmin causes the breakdown of your blood. So fibrin का insoluble जो threads बने हैं, clot जो बना है उसको break down करेगा in fragments। कौन करता है? प्लाज्मिन। ठीक है, प्लाज्मिन करता है। उसको enhance करने वाले drug they are known as a plasminogen activators। तो extrinsic and intrinsic again जैसे होता है blood coagulation का फैक्टर extrinsic intrinsic। Intrinsic मतलब क्या? ये inside the body। This drug will increase the plasminogen। This plasminogen is the protein profibrinolysin। It is also known as the profibrinolysin। तो इसको एक्टिवेट करेंगे करने वाले ड्रग। So these are the streptokinase, urokinase, then alteplase, tenecteplase। Alteplase is a reverse, alteplase is a recombinant DNA technology plasminogen activator। ये इनको इसको एक्टिवेट करेंगे। इसको एक्टिवेट होने के बाद ये क्या होता है? इसका कन्वर्जन होता है प्लाज्मिन में। प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिन? प्लाज्मिन विल ब्रेक डाउन द जो क्लॉट बना है फाइब्रिन का क्लॉट, तो उसको व्हिच इज इनसोल्युबल, इट विल ब्रेक डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स, फाइब्रिन फ्रैगमेंट व्हिच इज सोल्युबल। जो क्लॉट बना है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? प्लाज्मिन। ठीक है, उसको एक्टिवेट कौन करता है? तो एक्टिवेट करता है प्लाज्मिन। उसको एक्टिवेट करने वाले ड्रग जो है उसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। सो दिस एक्सट्रिंसिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, रिमेंबर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दे आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द क्लॉट। ओके, एक्सट्रिंसिक एक्टिवेटर, तो इंट्रिंसिक एक्टिवेटर आपके बॉडी में अगर माइनर क्लॉट बना है तो आपकी बॉडी ही उसको ब्रेक डाउन करती है। आपके बॉडी में अगर कोई माइनर क्लॉट बना है तो बॉडी ही उसको ब्रेक डाउन करेगी। कैसे? इंट्रिंसिक फैक्टर। फैक्टर नंबर 12A, Heckman's factor, kallikrein, tissue plasminogen will activate the plasminogen into plasmin। Plasmin का काम क्या है? Insoluble fibrin clot will be broken down into soluble fibrin fragments। लेकिन अगर ये फैक्टर्स ज़्यादा काम नहीं करेंगे, अगर कोई बड़ा क्लॉट है उसके ऊपर इसका एक्टिविटी नहीं रहेगी। So to break down the major clot, you need a extrinsic plasminogen activity, that is streptokinase, urokinase,
alteplase, tenecteplase. Okay, plasminogen activator, they are used as a thrombolytics. They will break down the thrombus, they will break down the clot. Now anti thrombolytics, anti thrombotics, जो थ्रोम्बस होते हैं उसको बनाने वाले ड्रग कौन से, thrombogenetics और anti thrombolytics. So drugs, they are also known as the tissue plasminogen inhibitors. Tissue plasminogen inhibitors, they are known as anti thrombolytics, and tissue plasminogen activators, they are known as thrombolytics. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेंगे, जो क्लॉट बनाए उसको ब्रेक करेंगे. जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर्स है वो क्या करेंगे, वो क्लॉट बनने देंगे. ठीक है. सो एक्सट्रिंसिक कौन सा है, टैक्सेनेमिक एसिड, ट्रैक्सेनेमिक एसिड. ECA, इथिलीन इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड, EACA, epsilon amino capric acid, and tranexamic acid. These are known as a extrinsic inhibitor of plasminogen activator. Right? Now, intrinsic inhibitor of plasminogen activator, that is alpha 2 antiplasmin and alpha 2 microglobin. These are again proteins present in the plasma. Okay? तो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो है वो क्या करेंगे, जो क्लॉट बनाए उसको ब्रेक कर देंगे, और प्लाज्मिनोजेन इनहिबिटर्स जो है वो क्या करेंगे, जो क्लॉट है उसको और क्लॉट बनने देंगे. These are the drugs. You will see thrombolytics, they will break down the clot. Thrombolytics मतलब break down the clot. So plasminogen is converted into plasmin. Plasminogen is converted into plasmin by plasminogen activator, like tissue plasminogen activator, like urokinase, streptokinase. So urokinase is present in the urine. Urokinase is isolated from urine. Streptokinase was isolated from Streptomyces bacteria. Now plasmin is able to break down the clot. Plasmin is a proteolytic enzyme. So it is a being proteolytic, it break down the clot which dissolve the clot. Plasminogen activator is used to dissolve the clot. So what are the plasminogen activators? These are the drugs. Streptokinase. So urokinase, it is obtained from urine, and streptokinase was obtained from hemolytic streptococcus bacteria. Then recombinant tissue plasminogen activator like altaplase, reteplase and tenecteplase. ये क्या है, recombinant DNA टेक्नोलॉजी से बने हैं. Isolated plasminogen streptokinase activator, APSAC, isolated plasminogen streptokinase activator. Example है anis reptilase. ठीक है. So it is a modified of streptokinase. इनके adverse drug reaction होता है bleeding, that is the most common for all anticoagulant. Multiple microemboli, मतलब जो बड़ा क्लॉट है उसको ब्रेक करके छोटे छोटे क्लॉट बनाएंगे. Multiple microemboli, allergic reaction, hypotension and hemorrhagic stroke, ये ब्लीडिंग कर रही है. थेरापेटिक यूजेस क्या है इनके, दे आर यूज्ड इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. याद रखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इश्चेमिक स्ट्रोक, pulmonary embolism, peripheral arterial occlusion, deep vein thrombosis. Peripheral arterial occlusion and deep vein thrombosis. तो समरी देखो इसको, प्लाज्मिनोजन क्या करता है, प्लाज्मिनोजन is activated by tissue plasminogen activator, TPA. It will activate plasminogen into plasmin. Plasmin will break down the fibrin thread into, जो fibrin होता है insoluble fibrin will be converted into soluble, break down and convert into soluble fibrin. तो ये basically tissue plasminogen activators है. This of streptokinase and place, streptokinase, urokinase, then alteplase, reteplase, tenecteplase. They are the tissue plasminogen activator. Plasminogen activator मतलब ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देंगे. प्लाज्मिनोजन को इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव होने के बाद में बनता है प्लाज्मिन. प्लाज्मिन का काम क्या है, जो क्लॉट बनाए, जो फाइब्रिन का इनसोल्युबल क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करके सोल्युबल क्लॉट बनाएंगे, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट. ओके, एंड दे आर यूज्ड इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. अभी क्या है, हीमोस्टैटिक एजेंट. तो हीमोस्टैटिक में तो लोकली अगर बाहर ब्लीडिंग हो रहा है तो बाहर ब्लीडिंग प्रिवेंट करने वाले कौन है, सो लोकल हीमोस्टैटिक एजेंट, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस. तो पहला होता है लोकली एक्टिव, तो टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स. एग्जांपल थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, देन फोम जेल, देन फाइब्रिन, ऑक्सीडाइज द सेलुलोज, microfibrillary collagen. So all they act as a local hemostatic. They are known as a styptic. They are also known as styptic.
STPYPTSS styptic. Then transfusional agent. Transfusional agent कौन है? ये सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है. फाइब्रिनोजेन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ब्लड प्लाज्मा एंड प्लाज्मा. नॉन ट्रांसफ्यूजनल एजेंट कौन है? सो इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड, विटामिन के, ट्रेक्सामिक एसिड, विटामिन सी, अप्रोटिनिन, डेमोस्प्रेसिन, इथामसाइलेट. तो इथामसाइलेट, ट्रेक्सामिक एसिड, इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड, ये क्या है कि ये ब्लड लॉस प्रिवेंट करने के लिए. तो जो लेडीज में जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सो एक्सेसिव ब्लड लॉस जब होता है, तो इन दैट कंडीशन दिस ड्रग्स आर यूज्ड. कौन से? ट्रेक्सामिक एसिड, देन इथामसाइलेट, देन epsilon amino capric acid to prevent the excessive bleeding, that is known as amenorrhea, that is known as जो excessive blood loss होता है लेडीज में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें ये ड्रग यूज करते हैं. ट्रेक्सामिक एसिड, इथामसाइलेट, अमीनो कैप्रिक एसिड, इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड. Sclerosing agent, they are irritating substances to obligate varicose vein, like sodium tetradecyl sulfate, ethoxyscleral phenol, sodium linoleate, ethylenamine oleate, sodium moroate. सो वेरिकोज वेन मतलब क्या है? ड्यूरिंग द एज, जैसे जैसे आपका एज होता है, बूढ़े होते हो आप, 70-75 एज में जब होता है, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके वेन्स देखो आप, पर्टिकुलरली लेग्स होते हैं, लेग्स के पीछे जो वेन्स है वहाँ देखो, वो क्या है, वहाँ पे वेन्स जो है वो बड़े हो जाते हैं साइज में, और उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन. एंड टू रिमूव दैट clogging, sclerosing agents are used. These are nothing but the sodium tetradecyl sulfate, scleral, phenol, sodium linoleate, ethanolamine oleate, sodium moroate. बाकी क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है इसका, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सार वगैरह कुछ नहीं. तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर देखना है. तो विटामिन के नोन एज अ फाइटोमेनाडाइन, विटामिन के का स्ट्रक्चर ये है. विटामिन के का स्ट्रक्चर मेनाडाइन डायन नेप्थोक्विनोन, इसमें क्या होता है, नेप्थोक्विनोन रिंग होता है. याद रखो कौन सा रिंग होता है? भेंडी, भेंडी इसमें होता है नेप्थोक्विनोन रिंग. ठीक है, नेप्थोक्विनोन, क्योंकि दो बेंजीन रिंग अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे नेप्थलीन. तो यहाँ पे दो क्या है, कीटोन है, उसको क्या बोलते हैं? नेप्थोक्विनोन. तो नेप्थोक्विनोन रिंग इज प्रेजेंट इन द विटामिन के. ठीक है, विटामिन के मेनाडाइन K3. अभी इन विट्रो कोएगुलेंट कौन से अपन देखा है? सोडियम साइट्रेट. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. सिट्रिक एसिड को सोडियम का सॉल्ट बना दो तो बढ़ गया सोडियम सिट्रेट. सोडियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम ऑक्जेलेट. भाई इन विवो कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, पहला है डाइकामेरॉल, कामेरिन डेरिवेटिव डाइकामेरॉल. तो जो नेप्थलीन रिंग होता है उसमें रिंग में से यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, उसको बोलेंगे कामेरिन रिंग. तो डाइकामेरॉल, डाई मतलब टू, डाइकामेरॉल, डाई मतलब टू, कामेरॉन, कामेरॉल मतलब कामेरिन रिंग, दो कामेरिन रिंग, और ऑल मतलब ये अल्कोहल. तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकामेरॉल. काम या क्लोर, क्लोर मतलब क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन आ जाएगा. काम या वारफेरिन का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वारफेरिन. सो 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो फिनाइल ब्यूटाइल 2 हाइड्रोक्सी क्रोमन 2 1. तो इसका स्ट्रक्चर का आईपैक नेम लिखा है, क्यों कि यही इंपॉर्टेंट है. इसको बोलेंगे क्रोमन रिंग. क्या बोलेंगे? क्रोमन रिंग. 4 हाइड्रोक्सी. ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी देखो, 1 ये ऑक्सीजन 1, ये 2, ये 3, ये 4. तो 4 हाइड्रोक्सी 3 इंटू क्या है? 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो 1 फिनाइल ब्यूटाइल. ये हो गया ब्यूटाइल आपका, ये हो गया फिनाइल, फिनाइल ब्यूटाइल क्रोमन 2 1, क्रोमन, ये क्रोमन रिंग, एंड 2 1 मतलब 2 के कीटोन. दैट इज द आईपैक नेम ऑफ योर वारफेरिन. सो 4 हाइड्रोक्सी 3 into 3 oxo 1 phenyl butyl क्रोमन 2 1, that is a coumarin. बाकी एसिनोकामेरॉल, एसिनो
एसिनोक्रोमेरॉल, ये स्ट्रक्चर। और इंडियन डेरिवेटिव जो होता है फिनिन डायन, एनिसिन डायन, ब्रोमीन इंडॉन, ब्रोमीन फिनी फिनिन डायन, एनिसिन डायन, ब्रोमीन डायन, ब्रोमीन डायन. So these are the Indian dion. So they are also anticoagulant. Okay, so this will end your chapter. एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन से है? एस्पिरिन. एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. ट्राइफ्लूएंसाल, सिर्फ यहाँ पे 3 क्लोरीन ऐड कर दो, ट्राइफ्लूएंसाल. ठीक है. टिक्लोपिडिन का स्ट्रक्चर क्या है? देखो टिक्लोपिडिन का स्ट्रक्चर ये है, कोई पूछेगा ना स्ट्रक्चर. देन डाइपिरिडामोल, इसका ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर. क्लोपिड्रोग्रेल इज अ थाइनोपिरिडिन डेरिवेटिव. ठीक है. पिरिडिन, पिरिडिन मतलब क्या? बेंजीन, ये पिरिडिन रिंग. और ये थायाजोल रिंग. थायाजोल रिंग जॉइंट विद द पिरिडिन नोन एज थाइनोपिरिडिन डेरिवेटिव, क्लोपिड्रोग्रेल. मेडिसिन केमिस्ट्री में उतना ही ज़्यादा कुछ है नहीं उसका इम्पोर्टेंट. सो दिस विल एंड योर